31, and before we go on to that, compulsory acquisition of property. That means how can you acquire, what are the clauses under which you acquire a property. Now, this Article 31 was earlier very important, but gradually it was replaced by Article 31A, B, C, and D. Article 31A, Article 31B, 31C, and 31D. So before we move on, I would just like to tell you the background. Like earlier, there was the land reforms jo the, the lands were under the zamindars. They had the zamindari system. That means revenue was collected by the zamindars and it was given to the Britishers. And in return, the Britishers gave them, the zamindars, the commission, plus they also got the ownership of those lands. So when the poor peasants, a time came when they were the real sufferers for all this. वो इस particular reform से या इस system से, जमींदारी system से gradually अपना land खोते चले जा रहे थे. और उस समय पर जब constitution build-up बन रहा था, it was, the zamindari system was gradually ending. It was not in the full-fledged way कि zamindari system खत्म कर दिया गया था after independence. It gradually ended. So उस समय पर हमें नई चीजों का जो implementation चाहिए था वो था land reforms. कई सारे land reforms हमें जरूरत थी. Firstly, जैसे कि sealing of a particular land to a fixed land which can be acquired by an individual. Like earlier, the zamindars were hoarding the lands. उनके पास काफी सारे हेक्टर्स ऑफ लैंड्स थे, लेकिन उसको सपोजिंग जब नए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए तो उसको हमने सपोजिंग 30 एकर्स 50 एकर्स तक हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे ज्यादा अब हम, मतलब हमने नहीं, गवर्नमेंट ने उसको एक पर्टिकुलर एकड़ ऑफ लैंड्स पे फिक्स कर दिया कि ओके, एवरी पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन दिस पर्टिकुलर लैंड. तो उसके रहते आर्टिकल 19(1)(f) प्लस आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया, जिसमें कि प्लस लैंड रिफॉर्म्स को बेटर करने के लिए कई सारे ये आर्टिकल्स ऐड किए गए, 31A, B, C and D etc. So before we move on, 19(1)(f) क्या था? It dealt with the acquiring and holding and disposing of the property. तो इसको खत्म किया गया. प्लस आर्टिकल 31 जिसकी अभी हमने बात की है, जो कि बात करता है कानून के हिसाब से कि प्रॉपर्टी को कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और कॉम्पनसेशन उसके बदले में गवर्नमेंट दे देगी. बट हु विल डिसाइड कि हाउ मच कॉम्पनसेशन इज टू बी गिवन? सो क्योंकि इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए आर्टिकल 31 को इनएफिशिएंट बनाया गया एंड उसकी जगह पे इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 31A, 31B, 31C को. So today we will try to cover up article 31A in this. Saving of laws providing for acquisition of estates etc. मतलब कि saving here means कि making of those laws which can make the acquiring of the states easy. कि आपको कितना land आप acquire कर सकते हो, कितना आपके लिए भी ये allowed है. यानी कि कोई भी जो भी कानून लाते you cannot declare void ki just that because it is against article 14 and 13, ये 14 and 19. अभी आगे सुनो. The acquisition by the state of any state or any right therein, or the extinguishment or modification of any such right, or the taking over of the management of any property by the state for a limited period, either in the public interest or in order to secure the proper management of the property. Now, A and B, they are talking कि अगर state ने कोई भी particular अपने जमीन, here ESTATE means जमीन या property. So, the acquisition by the state, अगर कोई state है, state here means the particular government in a state. STATE is a state, pradesh, and ESTATE is a property. So कोई भी प्रदेश अब उस जगह को या उस जमीन को acquire कर सकता है, ले सकता है, उसके सारे उसमें modifications ला सकता है और उसको आर्टिकल 14 या 19 को खत्म करता हुआ नहीं माना जाएगा.
Article 14 and 19, they talk about the freedom, the right you have for freedom of acquiring land, etc. तो अगर कोई स्टेट कोई प्रॉपर्टी को ले रहा है तो उसको ये आर्टिकल का खत्म होना नहीं समझा जाएगा. Then the taking over of the management of the property, सपोजिंग एक कोई जमीन है, उसकी मैनेजमेंट या उसके रख रखाव को, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, तो वो भी स्टेट कर सकती है. उसमें भी आर्टिकल 14 और 19 को वायलेटेड नहीं माना जाएगा. Then the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporation. The amalgamation means आप मिला देना, एक में मिला देना. तो दो या उससे ज्यादा स्टेट्स या उस एरिया को अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित के लिए काम में लग रहा है, तो the state has the power to amalgamate them. That means to bring them together, count them as one, and again it will not be considered as a violation of Article 19 and 14. Then D says the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers or corporations, or any or of any voting right, voting rights of shareholders thereof, or okay, they are saying ki the state has the power to either extinguishment, that means कि उनके powers को खत्म कर देना, या फिर उनके modify कर देना, that means उसको थोड़ा सा changes लाना. किन किन के, जो presently उस particular land के secretaries हैं, या जो officers उनको agenda को उसको maintain कर रहे हैं, जैसे कि treasurers, managing directors, directors or managers of that particular property estate, ESTATE. ठीक है, तो the state has the power to make changes in that also, and it again it will not violate the Article 14 and 19. So E, the fifth clause says the extinguishment or modification of any rights acquiring by virtue of an agreement, lease or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license. Supposing the land which you have, supposing I'm the owner of a particular land, and suddenly I discovered that there is a lot of mineral deposit in that land. So I, in a long run, I would be giving it away to the state. Why? Because the mining areas, the जैसे कहते हैं ना, oil refineries, all these areas are government owned. It is never privately owned. So we will be giving all these areas to the state, and again it will not be considered as a violation of Article 14 and Article 19. So yani ke all these 5 points in Article 31A, what are they basically talking about? कि कोई भी कानून जो स्टेट ला रही है, you cannot declare it void. आप उसको ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो हमारे आर्टिकल 14 और 19 हमसे छीन रही है ये स्टेट. नो, आर्टिकल 14 एंड 19 आपके आपके उस लेवल तक रहेंगे जहां तक आप अपने पर्टिकुलर प्रोमाइसेस में अपनी फ्रीडम के लिए बात कर रहे हैं. बट व्हेन द स्टेट is looking for an acquiring of a property, then it will follow the laws which are beneficial. यानी कि 31A एक summing up में क्या करता है? It has improved the land revenue system. It has given it a better जिसको कहते हैं बेटर आउटपुट दिया है 31A ने, जो इससे पहले लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे. एंड प्रेजेंट एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो थे, जो आर्टिकल 13 में हमारे पोस्ट या प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, उनके गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टॉप. ठीक है, कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं मानेंगे, या ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि आर्टिकल 14 और 19 हमारे राइट्स की बात करते हैं तो ये हमसे जो लैंड हमारा छीना जा रहा है. नो, स्टेट कैन एक्वायर एंड एट द सेम टाइम दे कैन गिव यू कॉम्पनसेशन, एंड कॉम्पनसेशन वुड बी that the one which is according to the present day scenario, जो उस लैंड की लागत है, या सॉरी प्रेजेंट डे जो उस लैंड की कॉस्ट है, उनके ग्राउंड्स पर वो आपको उसका कॉम्पनसेशन देंगे. देन दे टॉक ऑफ I lost the lines. अच्छा हाँ,
or shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred in by Article 14 and 19. So here I said all these five clauses जब आपसे स्टेट कर रही है या आपसे इनके अंडरटेकिंग कर रही है तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन कर रही है स्टेट, provided that where such law is a law made by the legislature of a state, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been preserved for the consideration of the President, has received his assent. Now, at the same time, they are saying कि ये जितने भी ऊपर के 5 clauses हैं, अगर ये सब इनवैलिड हो जाएंगे, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी. If a particular person has got that particular land area sanctioned by the president, that means the president has given up that particular piece of land and he has given consent means कि अपनी सहमति दे दी है कि that particular person can withhold that land, तो वो स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकती है. Then there is another, किस केस में स्टेट कुछ नहीं कर सकती है, the other clauses provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the state or any state and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as in within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or what is it, appertinent thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building, or structure provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof. So now the second clause by which the state could be stopped or could be checked is supposing a particular person has 10 acres of land which is not the ceiling limit also कि भाई हमारे हमने अगर 30 एकड़ सीलिंग लिमिट है कि इससे ज्यादा आपके पास लैंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अगले के पास 10 ही एकड़ है, लेकिन इफ द गवर्नमेंट हैज बाय एनी चांस फाउंड कि अच्छा ये लैंड हमारे लिए यूजफुल है या हम यहाँ से रोड बनाएंगे या यहाँ पे एक नेशनल हाईवे बनेगा, in any such case if the person is using it for his cultivation, that वो 10 एकड़ का वो जो जमीन है उसको अगर हम कल्टिवेशन के लिए यूज करें and I'm getting my earning out of it, so the government has to follow the instructions कि it has to go for the उसका जो reimbursement है या उसका जो लागत आ रही है उस जमीन की, उसकी कॉस्ट की, उसकी प्रेजेंट डे रीडिंग पे ही देगी गवर्नमेंट, उसको देगी जो पर्सन है जो उसको क्योंकि वो उसकी कल्टिवेशनल लैंड थी या उस पर वो काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज कि वो अब गवर्नमेंट को चाहिए या स्टेट की अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनने जा रही है, तो इसके लिए जो कॉम्पनसेशन है वो उसको प्रेजेंट डे मार्केट वैल्यू पर देनी पड़ेगी. नाउ टू इन दिस आर्टिकल, नाउ ए the expression state shall be in relation to any local area have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include. Now they are talking that when they have used this word state, they are telling you the state here means the land, जो जमीन है उसको उन्होंने स्टेट कही है, या जो लैंड प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने स्टेट माना है, और उसमें उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, एनी जागीर, इनाम और मुआफी or other similar grant, and in the states of Tamil Nadu and Kerala any janmam right, that means the various other names जैसे कि जागीर, ये भी जो आपकी लैंड होती है, जितना आपने जागीरदारी सिस्टम सुना होगा या जमींदारी सुना होगा तो जमीन. Now all these words are included in the word when we say state in the while this constitution was made. So the one term that they used was state, just as the one term they said ki India can also be referred as Bharat.
ठीक है ना. सो हियर द वर्ड स्टेट हैज बीन गिवन वेरियस नेम्स, जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा में जमीन को बोला जाता है उस सबको इनकॉर्पोरेट करेगा. देन नंबर 2, आई एम टायर्ड. एनी लैंड हेल्ड अंडर रोयतवारी सिस्टम. रोहितवारी इज कि जो आपने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ लैंड, वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक लैंड को खरीदा है, उसमें खेत खेत आपने जोता बोया और इसके बाद उसको वापस उससे जो मुनाफा आया वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने पास थोड़ा सा रखा और बाकी नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए फिर उसको खरीद लिया. ठीक है, दैट इज द रोहितवारी सेटलमेंट. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेट. The next third, any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including wasteland, forest land, land for pastures or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural laborers and village artisans. So they are saying they have categorized कि even these lands जो कि फॉरेस्ट के लैंड्स हैं या वेस्ट लैंड्स हैं, ये सब भी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड या उसको भी प्रॉपर्टी. व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेट, these lands are also we are talking of. Then B, the expression rights in relation to an estate shall include any rights vesting in the proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure holders, riyat, under riyat, or other intermediary or any rights or privileges in respect of land revenue. So rights here means the land revenue rights. That means जो हमारे लैंड के ऊपर जो हमने अक्वायर किया है या उसे बेच रहे हैं या उसे गवर्नमेंट ले रही है, तो ऑल दीज राइट्स जो हमारी राइट्स हैं, जो जिन पे हमारा हक है, उन सब का डीलिंग इस स्टेट वर्ड का जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या प्रदेश के द्वारा ही किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. वैलिडेशन क्या होता है? कुछ ऐसे कानून जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, जो जुडिशियली उसमें रिस्ट्रिक्शंस के लिए इम्पोज नहीं होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे वैलिडेशन एक्ट्स और रेगुलेशंस किए गए. अब सुनो. Without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31A, none of the acts and regulations is specified in the 9th schedule, nor any of the provision thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act or regulation or provision is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by any provision of this part, and notwithstanding any judgment, decree, or order of any court or tribunal of the country. Each of the said acts, regulation shall subject to the power of any contempt legislature to repeal or amend it, continue in force. So now basically वो कह रहे हैं 31B में कि कुछ ऐसे कानून जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे. अगर कोई भी कानून जिसको कोई भी लॉ जिसको हमने नाइन्थ स्केड्यूल में रख दिया है, तो उसको जुडिशरी उसको इस बेसिस पर वॉइड नहीं कर सकती है कि वो अब जुडिशियल वो 9th स्केड्यूल में रख दिया गया है. फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है ये. तो जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीना नहीं जा सकता है कि कोई भी लॉ, कोई भी अगर आपने 9th स्केड्यूल में रख दिया हो, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके लैंड वैलिडेशन के लिए है, तो जुडिशियल रिव्यू इसमें पॉसिबल कर दिया गया था. वेरेज इसको जब जैसे ही इन्होंने 9th स्केड्यूल में रख दिया था, तो 9th स्केड्यूल में हो जाता है कि जुडिशरी इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकती है. लेकिन इस पे रिव्यू किया गया कि जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है, 31B में ये आर्टिकल इनकॉर्पोरेट किया गया कि अगर कोई भी कानून जो जमीनी उसके ऊपर है, उसमें जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर नहीं होगा, उसमें आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट आप रिवोक कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट दे
talked about in this. Then we come on to 31C, saving of laws giving effect to certain directive principles. अभी हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करे नहीं है, लेकिन इसमें आगे जो इन फ्यूचर अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आएगा, उसमें इसका क्रक्स 31C का क्रक्स कुछ ऐसा है कि इसमें ऐसे कानून हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए लाए गए हैं, मतलब कि जो हमें डायरेक्ट करेंगे कि विच आर द प्रिंसिपल्स वी नीड टू फॉलो. So 31C deals with those directive principles जिनको कि इस 31C में लागू करने के लिए उनको करा गया, जिससे कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सके. ठीक है, द क्लॉज स्टिल रिमेन्स कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाए. ठीक है ना. अदरवाइज 31 आर्टिकल 31 को नल एंड वॉइड कर दिया गया था. ठीक है, क्योंकि वही देखते हुए कि for the betterment of land revenue reform, and it was replaced by 31A, 31B and 31C articles, and D of course. So let us come on to reading of this. Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing all or any of the principles laid down in Part 4. Part 4 is the directive principles of a state policy, shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19. So, right to equality is Article 14, and Article 19, it talks about the 6 fundamental freedoms which is provided to us. So, in any case, ये आप इसको null and void नहीं मानेंगे. ठीक है, तो वो कानून जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए लाए गए हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. और आप while doing this आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को आप नल एंड वॉइड ये नहीं कहेंगे कि अरे इसमें तो हमारा आर्टिकल 14 और 19 के संग समझौता हो रहा है. तो दिस इज व्हाट दे टॉक्ड ऑफ इन दिस. Then we come on to provisions that were such law that where such law is made by the legislature of a state, the provision of this article should not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the president, has received his assent. So, unless and until the laws are being made by the legislature of a particular state or it has been sanctioned by the president, you can always go for a judicial review in any of the cases. Then 31D, it talks about saving of laws in respect of anti-national activities. That means if you are into anything, if you are taking up any particular piece of land and you are using it for something anti-national activities, or maybe you are वहाँ पे आप terrorist activities को बढ़ावा दे रहे हैं या anything, so there are these laws which work in curbing and taking away of your that land. ठीक है, so 31D basically it talks about saving of laws in respect of anti-national activities. कोई भी नेशन जो हमारे देश के हित के लिए नहीं है, उसको रोकने के एक्टिविटीज को उन पे वर्क करता है. ठीक है, we'll stop here for today.